हेलो फ्यूचर स्कॉलर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। सो इन दिस वीडियो देर इज सम ट्विस्ट. आई एम गोइंग टू ऑल्सो स्पीक इन हिंदी सो दैट यू कैन समराइज वॉट आई हैव एक्सप्लेन इन इंग्लिश, राइट? तो मैं हिंदी में लास्ट में समराइज करके पूरी की पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करूंगी सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल टू grasp it. Today, I am going to make a video on the most awaited fully funded scholarship to study in Germany. तो अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं पूरी की पूरी स्कॉलरशिप के साथ, फुल्ली फंड स्कॉलरशिप के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है. दिस वीडियो इज फॉर यू डेफिनेटली. सो इट्स योर मोमेंट. Just go through the entire video and yeah, it will be really very helpful for you. This scholarship is DAAD, and the scholarship is right now it is open for development related postgraduate courses like DAAD. They offer different scholarships, right, for PhD as well, and for diploma and other like different scholarships. But right now, if you want to pursue postgraduate course, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, मास्टर्स वगैरह, तो दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू एंड दिस इज डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट for development related postgraduate courses. This is the link, and yeah, this scholarship is open for 26-27 academic year. So as you all know, similar to Commonwealth scholarship, आप for the following academic year, meaning 26-27 के लिए अभी ही scholarship open हो जाता है, right? So you will have to fill the application in 2025 to go and study in 26-27, right? So the best part of this scholarship is, as I have said, this is fully funded, and also it covers 2 years of master's course, unlike the other scholarships in UK, right, which is for 1 year. Like Commonwealth scholarship is for 1 year. This scholarship is for 2 years. What I'm going to do is I'm quickly going to tell you about who can apply, what all is funded, list of the courses. Duration is from 12 to 42 months, depend on the study program. So if it is it can be a master of 1 year, or like 2 years, or if it is you're applying for PhD, then it can extend to 42 months as well. Yeah, and then what is the value, what is the selection process, and I'll quickly go through the frequently asked question. तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, क्या क्या फंडेड है, क्या ड्यूरेशन है फंडिंग का, क्या क्या आपको कवर कर रही है ये स्कॉलरशिप, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं ना हम जब अप्लाई करते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, और सारी चीज़ें, राइट? सो क्विकली लेट्स गो थ्रू इट. एज आई हैव सेड ऑलरेडी, दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम. तो आप तभी एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपके पास एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आफ्टर यू ग्रेजुएटेड, राइट? तो अगर आपने से फॉर एग्जांपल बीटेक करी है या कुछ भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करा है, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब when you apply, you actually will have to upload document which will validate that you have 2 years of experience. तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है. इसी वजह से इट्स नॉट लाइक आप बोल दोगे कि 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बट यू नीड टू प्रोवाइड दी एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, राइट? अब बात आती है कि कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल है. तो डेवलपिंग कंट्रीज और और दी लाइक द रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर आल्सो कवर्ड. तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज कवर्ड है. तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एशियन कंट्रीज ही
कवर्ड है ना, लाइक. बट यू कैन ऑल्सो सी कि यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, all are covered, right? From South and Central Asia, you can see India is there definitely, and other countries as well are there, like Kazakhstan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all are here. And similarly, if you go to Africa, from North Africa, you have Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, and you can just go to the list of the countries, and you can see if you are eligible for this or not, right? तो ये थी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज. मैं ये जो लिंक है, आई विल प्रोवाइड it in the description. You can go and quickly review whether you are eligible for this scholarship or not based on your um, country, like. तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट, कि आप अगर आपकी डुअल सिटीजनशिप है, सो विल यू बी एलिजिबल फॉर नॉट. So it depends on in which country right now you are living. Say for example, you were born in India, but now you have been, like, living in, say for example, UK. Then you will not be eligible because you have never lived in India, you are not living in India, right? तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, राइट? नाउ व्हाट कैन बी funded. Now, you have the extensive list of the courses, just which you can go and check, right? So it is not only limited to one or two courses. The list is really extensive. It is covering, you can see, like, master's program in international and development economics, MSc development economics, small enterprise promotion training, development management, geography of environmental risk. It is even covering courses related to agricultural and forest sciences, natural and environmental sciences, right? Medicine and public health as well. If you want to do global health, if you want to do masters in international health, or for that matter, if you want to go ahead with PhD in medical research, then you also have this program as well. And then social sciences education and law, and finally, like, you have media studies as well. Many of my subscriber has many times asked whether courses related to law or media can be covered under any scholarship. So you can definitely explore this scholarship. तो आप जैसे देख रहे हो कि बहुत ही लंबी लिस्ट है, कौन कौन से कोर्सेज कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. तो आप ये अगेन, मैं लिंक जो है ये इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप बिल्कुल जा करके देख सकते हो कि आपके इंटरेस्ट की कोर्सेज इस स्कॉलरशिप में कवर हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव कवर्ड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल countries and the basic criteria of you being eligible, that at least you should have 2 years of professional experience after you graduate. And then you also saw the list of the courses which are being covered under this scholarship. As I have said, duration of the funding is 12 to 42 months. Now what all things are covered? तो हम थोड़ा सा वैल्यू के बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर है. आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, राइट? उसके बेसिस पे आपकी जो मंथली पेमेंट है वो डिसाइडेड होती है. सो इफ़ यू आर, से फॉर एग्जांपल, डूइंग मास्टर्स, देन यू विल बी गेटिंग 992 euros every month. And if you are doing doctoral, then you'll be getting 1300 euros. Additionally, your payment towards health, accident, personal liability insurance will be covered. Travel allowance will also be covered. So what happens here is, you'll have to book your ticket, and when you land, right, if you are a DAAD scholar, you'll get access to the DAAD portal, and in that portal you'll have to get apply for the reimbursement. तो जब आप DAAD स्कॉलर हो जाते हो, तो आपको DAAD स्कॉलरशिप की पोर्टल को एक्सेस मिलता है, और आप फिर उसमें जो भी आपको रेज करना है, आप उसमें अप्लाई करते हो, और फिर वो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाती है. ट्रैवल के लिए बता रही हूँ.
उसके बाद सर्टेन सर्कमस्टांसेस में यू कैन ऑल्सो गेट मंथली रेंट सब्सिडी. व्हाट हैपेंस इज, अगर आप किसी ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मंथली रेंट सब्सिडी. All right. And you may also be eligible for allowance for accompanying members of a family. So there is a chance that you can also take your family, but depending on the situation. So under certain circumstances, it is not applicable to each and every candidate. ऐसा नहीं है कि सभी को आप anybody can take, कोई भी लेके जा सकता है अपने फैमिली मेंबर्स को. So it depends on certain circumstances. Now what is the selection process? तो आपको जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप वो नेसेसरी फुलफिल आप करते हो, राइट. देन वन criteria for selection is definitely that. उसके बाद you have the bachelor degree, usually 4 years course, but it is not mandatory. तो आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज में 3 years की बैचलर डिग्री भी एक्सेप्टेड है, right. And then of course you need to have at least 2 years of professional experience. And finally you need to provide the letter of motivation explaining why you want to do this course, why this country, why this college, right, and what is your future plan, right. um, when you write this motivation letter, you also need to bring in something related to extracurricular activities, right. So that is also very very important. तो आप जब लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि आपकी प्रीवियस जो वर्क एक्सपीरियंस है या जो आपकी डिग्री है, वो कैसे जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं उससे लिंक्ड है, वो कैसे आपको सपोर्ट करेगा टू अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं, तो उसमें आपको डालना पड़ता है ये कोर्स क्यों, ये कॉलेज क्यों, ये कंट्री क्यों, क्यों आप बेनिफिट होगे आपको यहाँ पे पढ़ाई करने से. तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने अभी शेयर करी, ये सिलेक्शन का आपको सेलेक्ट होने में हेल्प करता है, राइट. सो दीज आर द 4 selection criteria. In addition, you'll also have the you might also have a telephonic interview as well with the university, right. It is not mandatory, but it may happen. So one definitely is academic requirement, right, which also includes your language proficiency, right. And then you have the graduation or undergraduation degree, which usually be of 4 years, 4 years, and then you need to have 2 years of experience, and then you need to provide the letter of motivation. So these are the basic requirement to for you to get selected. Yeah, so we have covered most of the basic thing, like list of eligible countries, and then the courses covered, duration, value, how what is the selection criteria, and how much you will be getting as a stipend of of being you DAAD scholar, right. Now, I will make another video as well, because I completely understand you might, get lost of how to apply. So, for example, I know if you will go to this list of the courses, you will see duration, application deadline, right? So you have the deadline for each of the courses here. Now what happens is when you actually go to these universities list, you might find that the application portal is not open, right. So what happen usually is you need to fill only one form, and there is a dedicated portal which is for EPOS DAAD, right. um, that I'll take up in the next session. But for now, this is the basic um, things that can be useful for you. This was the overview. Then we can go to the application requirement and then application procedure as well. We can take this up in the next session.
But for now, this is the general overview. Hope this is helpful. And if you want me to give additional information, you can let me know. And accordingly, I can also come up with the additional information. Thank you. Bye.